Hello everyone and welcome to EduTap YouTube channel. I welcome all of you in today's this special live session where I'm going to talk about the strategy for the exam of ESIC Deputy Director. As we all know that this exam's notification is already out, the form filling is already started, and this particular examination, the EduTap has launched a very special and specific course for this particular examination. And in this session, we are going to talk about a very important topic that is part of this particular examination's objective paper. So we are going to talk about the freedom movement and Indian Union, how to prepare this particular topic for our ESIC examination. So again, I welcome all of you to this session, and if I'm clearly audible and visible to you, I would like your help. I would like a yes in the chat box so that I know that everything is fine and there are no technical glitches and we can start with the session today. Okay, so thank you. So this session is all about the strategy for the subject or topic of freedom movement and Indian Union. As we already know, there is not much clarity about the pattern of the paper, how many questions will be there. All information that we have is that 2 hours examination is going to be there. In these 2 hours, you will have to answer certain questions, and these questions will be bifurcated into part A and part B. So part A will be dedicated to the English language and comprehension, and the part B will be dedicated to the general ability. And in this general ability, one very important topic is freedom movement and Indian Union, which is basically the Indian modern history, right? So what can be the strategy for this particular session? Let us talk about that. First of all, before starting with the session, I'm again going to remind you that EduTap has come up with a very special discount on the occasion of Raksha Bandhan, and if you use the code RAKHI, RAKHI, if you use this code, you are liable to get 40% flat discount on any of the courses which are being offered by EduTap. So again, do not miss out on this golden opportunity. And if you are looking forward for any particular course from EduTap, you can use this course, and this course is only available till 25th of August 2021. So you have time till tomorrow. Do not waste these important moments. And if you are looking forward to any course, use this particular code of Rakhi and get flat 40% off. Right, so this is the information, this is the announcement that I had to do before we start with the session. And now if I talk about the session, first of all, what we need to be very much aware about this particular course is, what is the syllabus? What are the important topics that we have to cover? Before starting any kind of preparation for this particular exam, what we have to know, what we must know is, what are the things, what are the topics that I'm going to study? So what are going to be the sources, or what are going to be the topics that I'm going to cover in this particular examination? So whether you have subscribed for the course offered by EduTap, or you have subscribed for the course offered by some other institutions, or you are studying on by yourself, you are self-preparing for this examination, first of all, you must be very much clear about what are the different topics that we are going to see in the exam. In the exam, the topic is freedom movement and Indian Union. So many of us, we are in a confusion whether we should start the study of Indian freedom movement from 1857 or from 1757, or from the Swadeshi movement in the 20th century after coming of Gandhiji. Then we should start reading about Indian freedom struggle. So it is better to be safe than sorry. And looking at the pattern of the exam, looking at the types of questions that we get to see in such kinds of exam, I can comfortably tell you that we have to cover since the decline of Mughals. After the decline of Mughals, how Britishers, how other European powers came into India, how different regional kingdoms in central, southern and northern part of India, they came into being. We have to read about all those things. So first of all, regional kingdoms. This topic has to be read comprehensively by you. You will have to cover the important regional kingdoms which erupted after the decline of Mughals. Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, Travancore, and even in the western parts of the country, the kingdoms of various Rajput princely states. You will have to read about all of them. Basic information, we need not get into very depth of these topics. We only need to scratch the surface of all these important topics. We must be having a very comprehensive information on the surface, superficial information about this particular topic. And for that, our course and NCERT books and various other sources which are available, they can suffice for this particular topic. Maratha and Sikh Empire, it is very important. Various battles were being fought by Maratha and Sikh Empire, even with other Indian powers as well as with Britishers, right? So all these battles, all these wars, Anglo-Maratha war, Anglo-Sikh war, all these wars, they have to be very clearly read about. Then Vijayanagara kingdom, how the Vijayanagara kingdom developed, what were the contributions made by the Vijayanagara kingdom in the medieval times, that has to be read about here. After that, advent of Europeans into India, how Portuguese, French and Dutch, other powers, European powers apart from the Britishers, how they came into India, ये चीज आपको जरूर एक बार इसको read करना होगा. After that, early centers,
early factories, early administrative centers, where were they being set up by these different powers? Where did Portuguese set up their first company? Where did Dutch they set up their first factory? Where did English set up their first factory? So all these important trivial facts, they are very very important. They are very simple facts, but they have to be very clearly understood by you, right? Rise of Britishers, they fought with all the kingdoms and all the forces which were there in India at that time. Since starting in 1757, Battle of Plassey. Before Battle of Plassey, even there were various battles being fought with other different kingdoms of Mysore and Carnatic. And after Battle of Plassey, again Britishers, they started consolidating their power. So all the battles which were being fought by the British, which policies they were used by the British and East India Company to consolidate their rule in India, that is also very important. So all the EIC, East India Company policies, as well as the Britishers' rise, this topic has to also be very clearly covered. Next comes your British policies. British came up with various laws and rules and acts, and all these policies, they have to be covered. You will also be covering them in the polity section. Indian polity section, you will be reading about various regulating acts, Councils of India acts, Government of India acts. All these acts and their provisions, they have to be read about. Expansionist policies, like policies of doctrine of lapse, policies of subsidiary alliance, policy of divide and rule, all these policies of Britishers, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट उनका किस तरीके से हो रहा था, परमानेंट सेटलमेंट है, रेवतवारी सेटलमेंट है, व्हाट वर द दीवानी एंड जुडिशियल राइट्स बीइंग imparted to Indians by the East India Company. All these different topics, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है. फिर ये रिवोल्ट ऑफ 1857, कई लोग जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहेंगे. सो मेनी पीपल थिंक दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, एंड देयरफॉर वी शुड रीड अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सबसिक्वेंट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. बट इन माय ओपिनियन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857 we should also be very clear about how different European powers came into India and how they set up their stronghold in India, right? In 1857 revolt, you must be aware about the causes of the revolt, what were the factors which contributed to the revolt, and what was the impact of the revolt. Important leaders कौन से थे और major centers कहाँ पे थे, कहाँ किन लोकेशंस में revolt of 1857 जो है वो ज्यादा strong था, कौन से leaders उनको locally lead कर रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए. These are very famous leaders and very famous centers. And 1857 से पहले के कुछ rebellions हुए हैं, like सन्यासी और फराजी uprising, वेलोर mutiny, बैरकपुर mutiny. There were various small incidents of revolts and rebellions against Britishers even before 1857. So they also must be remembered by you. They must also be memorized. नेक्स्ट कम्स दी इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड एसोसिएशन. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स बहुत सारे लोगों ने कैरी आउट किए इंडिया के अंदर, स्पेशली 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के अंदर. यहां पर हम बात कर सकते हैं राजा राममोहन रॉय की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, स्वामी विवेकानंद की, ज्योतिबा फूले की, इवन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी इन द लेटर पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट देम. कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड थे कांग्रेस फॉर्मेशन के साथ, एंड मॉडरेट्स, extremists and revolutionary freedom fighters. Moderates, extremists, they were part of the Congress framework, while the revolutionaries, they were part of the leftist trends, revolutionary trends in our freedom struggle. तो इन सभी freedom fighters के बारे में, इनके ideologies के बारे में, इनके तरीकों के बारे में आपको पता होना चाहिए. And Indian nationalism का rise कैसे हुआ है, how all the people belonging to Kashmir, from Kanyakumari to Kashmir, Gujarat to Arunachal Pradesh, how they came to identify themselves with one idea of India. ये origin कैसे हुआ, एक इंडिया की स्थापना कैसे हुई, चीज भी आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी. एंड 20th सेंचुरी का स्ट्रगल. After the 20th century dawn, how Indian freedom struggle it came up. स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल लीग का जो मूवमेंट है, इससे स्टार्ट होकर के गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, अभी तक 20th सेंचुरी में आने से पहले तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े, जितना समय हम अभी तक देंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, जितना भी समय हमने रीजनल किंगडम से लेकर के एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड एसोसिएशन, रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश पॉलिसीज, इन सभी चीजों में जितना समय देना है, उतना ही समय हमें स्ट्रगल इन 20th सेंचुरी के ऊपर देना है. बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कहां से है, स्ट्रगल इन 20th सेंचुरी से, राइट. सो स्वदेशी एंड होम रूल लीग मूवमेंट, partition of Bengal,
contribution of Gandhi ji after he came into India, what were his principles, what was his ideology, how he motivated different Indian masses to participate in the freedom struggle, and the First World War, Second World War, and its impact on India. This is very important. After that we should talk about Gandhian movements, all चंपारण मूवमेंट से लेकर के जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, उसके बाद जो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह की मूवमेंट्स हैं, ये सारी मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. कम्युनल ट्रेंड्स, कम्युनल ट्रेंड्स को लेकर के जिस तरीके से ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, हाउ इट सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिटवीन लोअर कास्ट्स एंड अपर कास्ट्स, ये चीज भी आपको यहां पर क्लियरली पता चलनी चाहिए. इंडियन नेशनल आर्मी, हाउ दी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, हाउ ही सॉट हेल्प ऑफ ओवरसीज पावर्स इन लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम इंपीरियलिस्ट ब्रिटिश रूल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल इंपॉर्टेंट फीमेल लीडर्स एसोसिएटेड विद INA एंड INA ट्रायल्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हाट वर द प्रपोजल्स बीइंग मेड बाय द ब्रिटिश, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए या इंडिया को पार्टीशन करने के लिए क्या क्या प्लान्स आए थे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. एंड फाइनली आफ्टर 47 हाउ डिफरेंट स्टेट्स दे केम इनटू बीइंग, स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया, किस साल में कौन सा स्टेट की फॉर्मेशन हुई, किस साल में किस यूटी को स्टेट के तौर पे, स्टेटहुड के तौर पे उसको प्रोग्रेस किया गया. डिमांड्स ऑफ स्टेटहुड कहां कहां से अभी भी इंडिया में हमें आती हैं, अलग अलग इंडिया के हिस्सों में देयर आर मेनी ग्रुप्स एंड मेनी ज्योग्राफिकल रीजंस व्हिच आर डिमांडिंग फ्रॉम फॉर अ सेपरेट स्टेट, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए. एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स व्हिच हैपेंड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हाउ द इलेक्शंस केम इनटू बीइंग, हाउ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया इट गॉट फॉर्म्ड, व्हिच वर द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, राइट. So far we have just talked about the syllabus. I have talked about all the important topics. These topics will be available in the form of a PDF view, right. So ये सारे topics आपको चुन चुन के पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने कहां से हैं? So now the important crux is your strategy. What can be your strategy? What are the sources? कहां से चीजें मिलेंगी हमें पढ़ने के लिए? So the sources, they are obviously your EduTap course notes. The course notes that we have formed for this particular module, there are 20 chapters, and in 20 chapters we have covered all the different topics that I mentioned very comprehensively, along with all the facts and information, and with MCQs as well, so that you can test your knowledge. Whatever you have read in the chapter, you can test in the MCQ section. Next up, history NCERT books. NCERT हिस्ट्री बुक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से बहुत सारी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एटलीस्ट फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन यूनियन से जुड़ी हुई, जिसको यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर सकते हो, राइट. सो NCERT हिस्ट्री बुक्स एंड EduTap कोर्स नोट्स के अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कोई और सोर्सेज को कंसल्ट करने की जरूरत है. बट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द EduTap कोर्स, देन NCERT हिस्ट्री बुक्स आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, और आपको ऑनलाइन जाकर के जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है. कैसे पढ़ेंगे, कितना समय लगेगा? तो देखिए 3 hours into 30 days, this is the time period that I think should be sufficient for you. If you are ready to give 3 hours daily to the subject, to this particular topic, then it will take you about a month. But if you are ready to give more hours, dedicated more hours to this particular topic of freedom movement, then ये आपके जो दिन है वो और कम हो सकते हैं. So currently right now we are not aware about the timeline of the exam. कब एग्जाम होगा इसका हमें कोई ज्यादा आइडिया नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि अभी हम बहुत अच्छे से आराम से हर कंपोनेंट को हमें कवर करना है. So we will make sure that this important topic of freedom movement, इसको हम जितना जल्दी हो सके कवर कर लें. 3 hours per day, then it will take about 30 days to cover this entire topic in entirety, and after that you will not feel any pressure in answering these kinds of questions. उसके साथ आपको रीड करना है एक बार इन सोर्सेस को, आपको रिवाइज करना है. कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है. जैसे ही आपने सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लिया, तो उसके बाद आपकी रिवीजन जो है रेगुलर चलती रहनी चाहिए, और मॉक टेस्ट्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए. अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड अनलेस एंड अनटिल यू सक्सेसफुली अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट अनफ कि आपने जो तैयारी की है वो आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो ये मेरा आपको सजेशंस है फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के. इसी फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर दोस्तों बहुत सारे जो हमारे जो चैप्टर्स हैं, बहुत सारी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई आप लोगों को स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, तो वो चीज आप जरूर चैट बॉक्स को यूज करके आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज वी विल कंक्लूड विद दिस सेशन टुडे, एंड आई होप दैट आई हैव बीन हेल्पफुल इन टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम.
there is a lot of text that has to be read, a lot of studying that has to be done, a lot of time that has to be invested. लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है हमें कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इन द एग्जामिनेशन, दीस क्वेश्चंस दे विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आई वुड नॉट से दे विल बी रिक्वायरिंग वेरी डिटेल्ड नॉलेज, वेरी इन डेप्थ नॉलेज, बट यस एक सुपरफिशियल नॉलेज आपको जरूर यहां पर रिक्वायर्ड होगी. आपको सब बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी अगर हो तो भी आपके लिए काफी होगा इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए. आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के हिस्टोरियन नहीं बनना है, लेकिन आपके पास एक इतनी नॉलेज हो जो कि एनसीईआरटी अप टू 12th स्टैंडर्ड को पढ़ के आप इकट्ठा कर सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपकी तैयारी ESIC के एग्जाम के लिए और अच्छी चल रही है, और इसमें EduTap आपकी जितनी मदद कर सकता है हम आपकी मदद करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट आवर कोर्स और अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड द स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जामिनेशन, you can always contact us on the number given here 8146207241, or you can drop a mail at hello@edutap.co.in, right? And very promptly we will respond to your calls and mails and resolve your queries. So this is all for today.